Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 5.8. So we were on chapter number 5 of class 6 and the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. So as you can see we have already completed question number 1 of this exercise. So now we'll be starting with our second question. So question number 2 is again on page number 108 of our NCERT book. I hope question number 1 is clear to you. Now, question number 2 says, name each polygon. Name each polygon. So, we are again given some figures. तो हमें ये बताने कि वो कौन सा polygon है, ठीक है? So, before that we should know the definition of the term polygon. What is polygon, children? So, polygon is a closed figure made up of only line segments. A polygon is a closed figure made up of only line segments. Okay. So name each polygon. अब हम कुछ figures draw करेंगे. And then we have to name कि वो कौन सा polygon है. And also children, it is also said that make 2 more examples of each of these. So make 2 more examples of each of these, right? So A part of question number 2 is something like this. कुछ ऐसा बना हुआ है पार्ट नंबर ए. सो नेम ईच पॉलीगन. अब हमें ये पता है कि ये पॉलीगन है क्योंकि इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट वी हैव टू नेम दिस पॉलीगन. सो इट मींस इट इज अ पॉलीगन, राइट? अब पॉलीगन में हमें पता है एक क्लोज्ड फिगर होती है व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. ये क्लोज्ड फिगर भी है और लाइन सेगमेंट से भी बनी है, राइट? सो इट इज अ पॉलीगन. अब हमें नेम करना है कि ये कौन सा पॉलीगन है. देखो, फॉर दैट वी नीड टू काउंट दी साइड्स. इसमें कितनी साइड्स हैं? सो साइड कैसे पता चलेगी? वर्टेक्स टू वर्टेक्स वन साइड होती है. तो दिस इज वन साइड. अब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक सेकेंड साइड, ऐसे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक थर्ड साइड, एंड देन इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक फोर्थ साइड, राइट? सो इट हैज 4 sides. So it is a quadrilateral. A polygon with 4 sides is termed as quadrilateral, right? ये तो हम सबको पता है कि जिसकी 4 sides होती है वो होता है quadrilateral. So a polygon with 4 sides is termed as a quadrilateral. So it has 4 sides, so it is a quadrilateral. Now we have to make 2 more examples of each of these. राइट. सो अब हमें इसके 2 एग्जाम्पल्स और बताने हैं. सो एग्जाम्पल हम इसके जो बना सकते हैं वो हो सकता है एक पैरेललोग्राम, बिकॉज चिल्ड्रन पैरेललोग्राम की भी 4 साइड्स होती हैं, राइट? एंड वो भी एक पॉलीगन होता है, ठीक है? क्योंकि वो क्लोज्ड फिगर है एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली
लाइन सेगमेंट्स। एक और एग्जांपल देना है, लेट्स मेक अ रेक्टेंगल देन। ठीक है, ऐसे तो स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे तो ट्रेपीजियम भी हो सकता है, राइट। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, काइट, रोम्बस, राइट, ये सब क्या है, फोर साइडेड फिगर्स है, सो ये क्वाड्रिलेटरल्स है, राइट। सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड एग्जांपल हमने दे दिया, एक यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम एंड यहाँ पे लिख देते हैं रेक्टेंगल। So again rectangle is a four-sided closed figure made up of only line segments, and parallelogram is again a four-sided closed figure made up of only line segments. So I hope part number A is clear to you. सबसे पहले हमने नेम किया कि ये जो पॉलीगन है ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इसकी फोर साइड्स हैं। देन हमें उसके दो एग्जाम्पल और देने थे, तो पहला एग्जाम्पल था पैरेललोग्राम एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज रेक्टेंगल। All right, so I hope part number A is clear to you. Please pause the video and note this down so that we can start with our second part. All right, so now we are starting with part number B. So let's start now. So let's start part number B. Question number 2. So B part में जो figure given है, it is something like this. So now we have to name this polygon. अब हमें ये पता है कि ये polygon है because it is made up of line segments and it is a closed figure, right? यही दो properties हैं जो polygon की हमें fulfill करनी होती है, right? So it is a polygon. Now we have to name this polygon. So for that we'll count the number of sides now. So vertex to vertex होती है side. So अब यहाँ पे एक vertex है इधर and second vertex is here. So this is one side, this is second side and this is third side, right? एक side ये रही, एक side ये रही, एक side ये रही. So three sides and three sided अगर कोई figure होती है that is a triangle. So what we will write, it has three sides. So it is a triangle. इतना तो क्लियर है। अब हमें देने हैं दो एग्जाम्पल और ट्राइंगल के, ठीक है। सो फॉर दैट if we look at this triangle children, this is a right angle triangle जिसका ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें दो एग्जाम्पल और देने हैं, एक हम एक्यूट एंगल का दे देते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हम यहाँ पे लिख भी देंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड obtuse angle triangle, right? So I think part number B is also clear to you. सबसे पहले कि हमने जो पार्ट में गिवन था उसको जज किया कि इट हैज थ्री साइड्स, सो इट इज अ ट्राइंगल। अब पॉलीगन तो है बट थ्री साइड्स वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। देन हमने एग्जाम्पल दिए, दो और ट्राइंगल ड्रॉ करें, जो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, और वो दोनों भी पॉलीगन है विद थ्री साइड्स, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो ट्राइंगल्स, राइट। इसमें ये वाला एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है और इसमें तीनों ही एंगल है एक्यूट एंगल, राइट।
this was our B part, children. I hope this part is clear to you. Please pause the video and note this down so that we can start further. Alright, so this was part number B. I hope this part is clear to you. Now we are starting with C part. Part number C is something like this. So this is our C part, children. Now we have to again name this polygon. So it means this is a polygon because इसमें ये सिर्फ line segment से बना है and it is a closed figure also. But now we have to name this polygon कि ये polygon कौन सा polygon है. So for that we need to count the sides. Let's first mark all the vertices. So this is the first vertex, second vertex, third vertex, fourth vertex and fifth vertex. ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं कितनी sides हैं. This is the first side, this is the second side, this is the third side, this is the fourth side and this is the fifth side. So it means it has 5 sides. So it is a, so जब भी एक polygon में 5 sides होती हैं, it is a pentagon. So children, if you haven't watched our introduction video, please go and watch that video. In that video I have explained in detail कि 5 sided वाले polygon को क्या कहते हैं, 6 sided polygon को क्या कहते हैं, 8 sided polygon को क्या कहते हैं. So just go and watch that video. Okay, this question will be very easy for you. So जब भी 5 sides होते हैं polygon की, it is a pentagon. ठीक है, so अब हम लेंगे more examples of पेंटागन. ये तो एक फिगर थी जो हमें ऑलरेडी गिवन थी. अब हम इसको अगर हम अपसाइड डाउन कर दें लाइक दिस, so this is also a pentagon. So again we have 5 sides. See, 1 2, see 1 2 3 4 and 5. So this is a pentagon. अब हम एक और पेंटागन बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, so again 1 2 3 4 and 5, again 5 sides. ठीक है, so these all are examples of pentagon, right? ये भी एक पेंटागन है, ये भी एक पेंटागन है और ये भी एक पेंटागन है. इसको थोड़ा सा शेप इसकी चेंज कर देते हैं, ये सेम लग रहे हैं दोनों. ठीक है, तो ये भी एक पेंटागन है. अगेन इसमें 5 साइड्स है. सी 1 2 3 4 and 5. तो फिगर में अगर 5 साइड्स होंगी इट विल बी अ पेंटागन. जरूरी नहीं है वो ऐसा ही दिखेगा या फिर ऐसा ही दिखेगा. नो, अगर 5 साइड्स होंगी इट विल बी अ पेंटागन, राइट? So this was part number C, children. I hope this part is clear to you. Please pause the video and note this down. Then we'll be starting with our D part or fourth part. Okay, so now we are starting with part number 4. अब fourth part पे आते हैं.
पार्ट में जो फिगर गिवन है it is like this 1 2 3 तो कुछ ऐसी फिगर गिवन है। अब हमें लेट्स जस्ट काउंट दी नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट, जब भी हम बता पाएंगे। देखो ये लाइन सेगमेंट से बनी है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, सो इट इज अ पॉलीगन, ये तो क्लियर है राइट। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब हमें ये बताना है विच टाइप ऑफ पॉलीगन इट इज, सो फॉर दैट वी नीड टू काउंट दी साइड्स अगेन। अब हम साइड्स काउंट करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल पॉइंट आउट दी वर्टिसेस। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट। तो 8 वर्टिसेस हैं इस फिगर में हमारे पास। लेट्स काउंट दी साइड्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड, सिक्स साइड, सेवन साइड्स एंड 8 साइड। यहाँ से स्टार्ट किया था राइट। सो 8 साइड्स, सो इट हैज 8 साइड्स। So it is a octagon. जब भी 8 साइड्स होते हैं पॉलीगन में, वो पॉलीगन होता है ऑक्टागन। I will again suggest to go and watch my introduction video. देन ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब हमें 2 एग्जांपल्स और देने हैं ऑक्टागन के। ऑक्टागन मतलब पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स। सो कैसे भी आप साइड्स ड्रॉ कर सकते हैं, बस वो 8 साइड्स होनी चाहिए। देखो ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ऐसी एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक वर्टेक्स यहाँ। अच्छा, अब काउंट करते हैं कितनी साइड्स हो चुकी हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। सो इट मीन्स, देखो अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 साइड्स हैं, इट मीन्स ऑक्टागन राइट। ऐसे ही सिंपली काउंट करें 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 8 साइड्स, अगेन ऑक्टागन। तो 8 साइड्स ड्रॉ करनी है, कैसे भी कर सकते हैं, बट वो 8 साइडेड फिगर होनी चाहिए। जब भी वो ऑक्टागन हम उसको नेम कर सकते हैं। सो इट मीन्स दिस वाज डी पार्ट चिल्ड्रन। इट मीन्स हमने ऑक्टागन वाले दो फिगर्स भी ड्रॉ कर लिए। दिस वाज डी पार्ट, दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यस, so I hope this question is clear to you. Please pause the video and note this down fast. Alright, so this was D part children. This was the last part of question number 2. With this we have completed our question number 2 also. So now 3, 4 and 5. 3 questions are still left that we will be discussing in our next video. So stay tuned for my next video. If you still have any doubt, any query in any of the question or in any of the part, don't forget to mention in our comment section below. I'll surely reply to each and every query of yours. Otherwise, practice more and more questions. I'll be coming up with more questions now. Third question of exercise 5.8 in our next video will be starting. So stay tuned and bye-bye.